Good afternoon, one and all. Welcome to uh, this flagship mega annual expo event of Agri Odisha or Krushi Odisha, organized by Department of Agriculture and Farmers Empowerment, Govt of Odisha. ए राज्यस्तरीय कार्यक्रम विभिन्न जिल्लारू आसिथिबा समस्त चाषी भाई भौणी माननकु मोर आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन समस्त को सुस्वागतम. Now I welcome one and all on behalf of Directorate of Soil Conservation and Watershed Development on this session, that is Value Chain of Coffee and Emerging Agribusiness for Women. I took this opportunity to express my heartfelt gratitude to our panelists or guests who had graced this occasion with their august presence. Now may I request our guests or panelists to please come over the dais to start the session. Sir, ma'am, please. I would request Upendra Saha, SLO Coffee Board, Ms. Priyambada Bisoi, DPM OLM Koraput, Ms. Rajeshwari Reddy, owner Madhu Agro Plantation, Kelar Coffee Koraput, Mrs. Nisa Thomas, planter cum owner, Anaikudu Estate, Karnataka, Dr. Sangram Kesari Swai, Dean Research OUAT, Sri S.N. Nayak, Joint Director, Soil Conservation and Watershed Directorate. Now I would like to cordially invite Sri Upendra Saha, SLO Coffee Board, to welcome the participant with a brief introduction by presenting a memento as a token of appreciation. Sir. Dr. Sangram Kesari Swai, Dean Research OUAT. Ms. Rajeshwari Reddy, owner Madhu Agro Plantation, Kelar Coffee Koraput. Mrs. Nisa Thomas, planter cum owner, Anaikudu Estate, Karnataka. Ms. Priyambada Bisoi, DPM OLM Koraput. Now I would request our Joint Director, sir, to honor our Chairman, Sri Upendra Saha's SLO Coffee Board. Now I request Dr. Sangram Kesari Swai, Dean Research OUAT, to facilitate our Joint Director, sir. Thank you everybody. Now I may request Sri Upendra Saha sir, SLO Coffee Board, to welcome the panelists with their brief introduction and a brief on coffee scenario of Odisha. Sir, please. I take this opportunity and thank Krushi Vibhag, especially Directorate of Soil Conservation and Watershed, to give us such a big opportunity to bring that coffee value chain at this level of platform.
Before proceeding, I would like to welcome all the heart of our this program, all coffee farmers. सवे भल अछंती ओके आपणको समको मु स्वागत जनाऊँगी आउ स्पेशली माँ मान को देखिक मत बहुत खुशी कलाहांडी कंधमाल कोरापुट सबू जगह आपण आसी एते दूरी बहुत बहुत स्वागत आउ कॉफी एबे प्राय सबू जिले में होची बाकी मु भावुची कॉफी है पारिबनी जदि दुईटा जिनिस न हेबो इफ टू थिंग्स आर नॉट देयर कॉफी वी कैन नॉट थिंक ऑफ द फर्स्ट थिंग पहला कथा होचे जदि कॉफी न थिबो केबे जदि छाई न थिबो और सेकंड में भावुची जेबे माँ माने न थिबे आपणकर बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमें कॉफीटा गुटे खाली गछ नुहे कि खाली गुटे चाष नुहे एटा गुटे छोट छुआ भलिया आउ मैं भावुचे कोरापुट जिलू नहीं कलाहांडी जिले में भी माँ मैंने सेटा अनुभव करिसंती गला वर्षे तार गला वर्षे कि केते केमती छोट छुआ भलिया ताकू जमती जत्न करा हुए 3 इयर्स सेमती कॉफी गछ को हमें जत्न करिछु और भल भाव से आणिकी कॉफी प्लांटिंग रे दिया है आ से माँ मैंने भी मुझे देखिपे से मैंने आसी आज तो यहाँ गोटे गर्वर विषय कि जो काम हमें करूँ सेटा यही प्लेटफॉर्म रे यही जगह रे समकिरर सहित हमें आज शेयर करवा तो आउ थे वेलकम सो टू द डायस एंड ऑल द रेस्पेक्टेड डिग्निटरीज came here to attend this session. I welcome you all again. Coffee, as I said, it is not just a crop, it is a mode of livelihood in the rural areas of Odisha particularly. When we see in a larger perspective, coffee in India, it grows majorly in Western Ghat and Eastern Ghat, some parts of the northeastern region. When coffee is grown in these regions, there is a particular reason why it is being grown there and not in any other place. The very first thing is the microclimate. In that, the height elevation factor is coming from mean sea level. Second thing is the annual rainfall, blossom shower and backing shower. Third thing is temperature. So Western Ghat already we know Karnataka is the leading state in India. Tamil Nadu, Kerala is also supporting in Western Ghat part. But Eastern Ghat, some part of Tamil Nadu, Andhra, Odisha is included. So when Odisha is included in that, we are having 6 potential districts. And I would like to thank the Agriculture Department, especially Directorate of Soil Conservation and Watershed, who have taken all this long effort, big effort and a visionary effort to bring coffee as a mode of livelihood. In that, we can see by ourselves the end beneficiary directly, the growers who are involved, they are present here. So definitely it is beneficial part. Second thing, when we say it is a support part of livelihood, by default, it is supporting our forest. I can say it is helping in afforestation. माँ माने मु कहूचे गुटे कथा कि कॉफी खाली गुटे चाष नुहे कि खाली गुटे गछ नुहे एटा हमर जीवन आजीविका पाई गुटे साधन खास करी जो हमर पहाड़िया अंचल अच्छे सेठी ता संगे संगे मु कहूचे कि एटा गुटे जंगल सृष्टिर हमर सहयोग बिकॉज इन all districts of coffee, we can name it out: Koraput, Kalahandi, Kandhamal, Raigada, Gajapati and Kyojhar. By default, forest is there and it is in their culture to preserve the forest. So when we are giving a crop which is helping them to get a livelihood, simultaneously protect their forest, it's not just a farming operation or farming culture, it's preservation of their culture also. So in that light, today's topic is framed, well framed. So coffee value chain is there. In that, our dignitaries
have come all over from different place of India. I would already, as Madam welcomed, so we have 5 dignitaries with us. First, Priyambada ma'am, who is a district program manager from Odisha Livelihood Mission. She is doing wonderful job for the initial phase of coffee, that is nursery, and taking up and proceeding with the initiative taken by the CDT Koraput and giving a role model to other districts. Then Rajeshwari Reddy madam, who is also owner, come grower, come processor, come having a brand like Kelar Coffee, and only women private entrepreneur in coffee in Odisha. Then we are having with us, I would give special thanks to her, Nisha Thomas ma'am. So she is a planter, come owner, and also Anaikadu state in Karnataka she is owning, and post-COVID era, she has done wonderful job and brought many waste to best condition. She thought of what is waste, how better we can utilize and bring a value to the farm. So I welcome her also. And at the end, I would like to welcome our Dean Research from OUAT, Dr. S.K. Swai sir, who is known for his innovations and a heart-based innovation where he will see the problem and his solution, tentative solution. Somebody he was saying in a previous session, one honorable speaker, कि there are problems, there are solution, we have to focus on solution. I say focus on the problem first. When you focus on the problem, indirectly or directly you are leading towards the solution, because solution is there inside a problem itself. So I think sir is one such kind person who finds all possible solution from all problems. So let us proceed to this session. First of all, I would like to invite Priyambada ma'am to briefly introduce about the work of WSHGs in coffee nursery. Priyambada ma'am. समस्तंकु नमस्कार। आजिकार ए सेशन आमर वैल्यू चेन एंड कॉफी एंड एमर्जिंग फॉर वुमेन फार्मर्स ए सेशन रे उपस्थित थिबा मंच रे मुख्य अतिथि साहा सर आम सहित अछंती स्वाई सर, शैलेंद्र नायक सर, थोमास मैम, मोर जिलार मोर सहयोगी रेड्डी मैडम, आम कोरापुट जिले में इठू उपस्थित थिबा डीडीसी सीडी सर, आउ आमर कॉफी डेवलपमेंट ट्रस्ट रो अन्य अधिकारी तथा विभिन्न जिलू आसीथिबा कॉफी को भल पाउथबा समस्त अधिकारी वृंद, मोर कॉफी प्रेमी बंधुगण तथा मोर मातृशक्ति, मु आउ थरे समस्त को नमस्कार करुछि, स्वागत करुछि ए सेशन को। मु कोरापुट जिला प्रशासन तरफरु प्रियंबदा विषय डीपीएम मिशन शक्ति आपण मानकु ए जो कॉफी नर्सरी उपरे किछि अवगत करैबा पई चाहूछि। कॉफी नर्सरी आमे कॉफी पीबा पई समस्त भल पाउना, भल पांती? बहुत भल पाती। माँ मैंने बेसी ताली मारले माँ मैंने ही बेसी भल पाती, माँ मैंने ही कॉफी बनाती समस्त को दियंती, माँ मैंने ही कॉफी ग्रो करती। बहुत बढ़िया कथा। आम कोरापुट जिले में गोटे प्रयास आरंभ होइछि जिला प्रशासन तरफरु, कलेक्टर आओ जिलापाल कोरापुट तथा आमर मुख्य निर्वाही अधिकारी जिला परिषद कोरापुट का प्रत्यक्ष तत्वावधान रे मिशन शक्ति, कॉफी उन्नयन ट्रस्ट और कॉफी बोर्ड रो मिलित उद्यम रे चारा उत्पादन करा जाउछि। आमे कॉफी पाइबा पई हेले
आमको चारा निहाती दरकार से चारा 2 वर्ष है 21-22 22-23 वर्ष रे आमर स्वयं सहायिका गोष्ठी माँ माने उत्पादन करुछंती कोरापुट जिल्ला रे एटा गोटे जिला प्रशासन तरफ अभिनव पदक्षेप आउ से माँ माने भी एठी उपस्थित अछंती जो माने कि कॉफी चारा उत्पादन करुछंती आपण माने जानिथिबे कोरापुट जिल्ला सार जेमती कहिले ईस्टर्न घाट रो पहाड़िया अंचल जोठी की कॉफी उपयोगी जगह अछि आमे केमिति से कॉफी उत्पादन कॉफी चारा उत्पादन करिथाउ तार प्रक्रिया विषय रे मु सम्यक सूचना देवी जेहेतु आमर अन्य जिल्ला रु आसीथिबा माँ माने भी सेही मॉडल टाको आपणैबे सेमती करिवे आउ लाभवान हेबे। आमर प्रथमे ड्रोन सर्वे करा हुए ड्रोन रे सर्वे करा हुए आपण माने जानि छंती जे कॉफी को किछि छाई किछि खरा दरकार संपूर्ण छाई हे गले हेबनी किंबा संपूर्ण खरा रे कॉफी हेबनी आम कोरापटिया रे भाषा रे कहंती कॉफीटा गोटे सुकुमारिया गछ किछि खरा दरकार किछि थाई दरकार सेथि पई ताकू ड्रोन सर्वे करा हुए जे को जगह रे छाई अछि जिला प्रशासन तरफ ड्रोन सर्वे कला परे आमर एरिया आसी जाए जे केते अंचल रे ए वर्ष कॉफी चारा रोपण करा जिवो तापरे से अनुसार आमर कॉफी उन्नयन ट्रस्ट आमर डीडीसीडी सार अछंती से इंडेन प्लेस करंती मिशन शक्ति विभाग को डीपीएम मिशन शक्ति को से इंडेन प्लेस करंती जे आमर एतिकी जगह दरकार एतिकी कॉफी चारा दरकार आउ से हिसाब रे आमे स्वयं सहायिका गोष्ठी गुड़ा को चयन करिथाउ आपण माने जानिथिबे मिशन शक्ति अंतर्गत ग्राम पंचायत लेवल फेडरेशन स्वयं सहायकर जो ग्राम पंचायत स्तर रे संघ अछि ग्राम पंचायत स्तरीय संघ आमे से संघ को दायित्व देई थाउ से संघ कौन करे केमती तार कॉफी उत्पादन करि थाए प्रथमे आपण जानिथिबे कॉफी पई 2टा पटाली दरकार प्रथमे प्राइमरी बेड प्राथमिक पटाली रे मंजी रोपण करा जाई थाए मंजी कोठु आसे ना मंजी हमर डीडीसीडी सार देई थांती आम कॉफी उन्नयन ट्रस्ट हमको जोगाई थांती स्वयं सहायिका गोष्ठी को तापरे से मंजी एठी मु देखैबा पई चाहूची पटाली तैयारी करा है थे फास्ट बेडटा देखंतु एटा गोटे पटाली आमे जो प्रकार नर्सरी करबा पई हेले गोटे पटाली माटी रे पटाली तैयारी करा है थे एवं से पटाली रे प्रथमे मंजी पड़ी थाए से मंजी रु हमर सेकेंड रे बटम फेज को आसे एटा जो तळे जो फोटोटा अछि आपण देखुथिबे बटम आकार माने ऊपर गोटे बटम भलिया आसीबो से मंजी फाटिकी सेटा को हाराहारी गोटे 1.5 मास बा 45 दिन लागि थाए तापरे फोटो उडा उल्टा पलटा हो जाइछि एडा देखंतु प्रथमे मंजी पड़िला ऊपर फोटोटा तापरे हमर ऊपर को उठिकी बटन साइज रा हैला एटा को हाराहारी 45 दिन लगी थाए तापरे थर्ड फेजटा हैला हमर बटरफ्लाई स्टेज माने प्रजापति भलिया आसीबो से गछटा तापरे हमर गछ जते बेले हमर बटन साइज आसी जाई थाए हमर प्राथमिक पटाली रु सेकेंडरी बेड बा द्वितीय हमर सेकेंडरी पटाली को ताकू ट्रांसफर करा हुए से माटी काढ़ी की उठे की ताकू पॉलीथिन बैग रे रखा है थाए आउ एथिरे हमर माँ माने अछंती आमर हाराहारी 200 रु ऊपर माँ ये काम करुछंती आमर गत वर्ष 17टा नर्सरी आमर डेभलप करा जाइथिला आउ सेइथिरे आमर 200 बा 16टा एसएजी सेठी शामिल हेइथिले आउ एटा जो आमर रहिला तापरे ता नेक्स्ट फेजटा मु कहूची तापरे गछ बढ़ी बढ़ी जीव 2 पत्र 4 पत्र 4 पत्र रु 6 पत्र एमती हेकी जीव केते बेले गछटा मैच्योर हुए ना गछटा मैच्योर हुए जेते बेले 6 पेयर लीव होई थाए 2 पत्र हेकी आसे यार आपण माने भी जानि थिबे जो माने करूछंती कि इन्वॉल्व अछंती आ गछटा जेते बेले 6 पत्र 6 पेयर पत्र हे जाय माने 6 नंबर जोड़ी पत्र आसे सेते बेले से लगैबा पई एलिजिबल हे जाय
आउ एटा हाराहारी आमर समय नहीं थाए 5.5 मासरू 6 मास माने गोटे पेयर पत्र हेबापई 10 रु 15 दिन लगी था। एमती आम देखा जदि गोटे नर्सरी को मंजी पोतिबा ठू आरंभ करी आम गछ लगेबा जाए 6 पेयर पत्र हेबा जाए आम देखा 6 मास लगी थाए प्राय 6 मास लगी थाए। या भितर तेबे मिशन शक्ति कौन करुछि ना यही जो 6 मास कौटू है आमर जानुआरी प्रक्रिया आरंभ होता है। जानुआरी आमर जून जुलाई जाए यही समयटा नहीं थाए नर्सरी आमर प्रमोट करने यही समय भितर साधारणतः भाव में आमर माँ मानकर काम धंदा सरी जाई थाए चाषबास काम सरी जाई थाए से माने काम पाई न थांती घरे बसंती किंबा छोटिया मोटिया काम करती नहले केतेक स्थल रे माँ माने बाहर को चली जाती काम धंदा पाई। एठी आमर एई जो नर्सरी आरंभ करागला ता द्वारा माँ माने आउ बाहर को जाऊ नाहंती आउ 6 मास धरी जो लीन पीरियड रहिला सेठी माँ माने काम पाई जाउछंती। आउ एथिरे कौन होउछि ना माँ माने को भली आमर जीपीएलएफ को भली भाव में ताकू मैनेजमेंट करुछि जीपीएलएफ को बा ग्राम पंचायत स्तरीय संघ को दे दिया होउछि आउ सेथिरे से माने स्वयं सहायता गोष्ठी गुड़ाकर माँ मानू जो मैंने कि काम धंदा करी पेट पोषण करती साधारणतः मार्जिनाल फार्मर कि लैंडलेस फार्मर थांती से मानू डेली वेज हिसाब से काम जोगाई थाए। आउ जेतिकी से मानू पारिश्रमिक देला परे एठी आ गोटे कथा जे मंजी आमर कॉफी डेवलपमेंट ट्रस्ट जोगाई थांती आउ ए गछ आपण माने भाबुथिबे जे माँ माने गछ कोठी बिक्री करंती ए चारा कोठी बिक्री करंती किंतु खुशीर कथा जो कॉफी उन्नयन ट्रस्ट जो आमको इंडेंट दे थांती ऑर्डर दे थांती से माने ही ताकू किणिकी नहीं जाती आमको अन्य कौन सी मार्केट खोजिबा पई पड़ेनी हला से माने ही नहीं जाती उचित मूल्य रे आम ए जो नर्सरी रु माँ मान पाखरु नहीं जाती से बिक्री करिवार कौन सी असुविधा हुएनी। मु तार गोटे पर गोटे फोटो देखाइबा पई चाहिबी। एटा मु कहूली जे आमर 17टा स्वयं सहायिका गोष्ठीर आमर 6टा ब्लॉक रे 6टा ब्लॉक रु 6टा जीपीएलएफ को दिया होइथिला सेइथिरु 200 माँ ये इनवल्व होइथिले। एटा गला वर्ष विगत वर्ष एवं ता पूर्व वर्षर फिगर आउ तापरे आमर 2 वर्ष रे 22 लाख कॉफी चारा उत्पादन करा जाई कॉफी उन्नयन ट्रस्ट कोरापुट को प्रदान करा जाई जोगाई दिया जाई 22-23 रे 23-24 रे जोटा कि मु कहूली 6 पत्र विशिष्ट चारा आउ से माँ मैंने एते भल काम करुछंती जे आपण मैंने देखिले खुशी न होइकी रही पारिबेनी। मु पर्सनाली व्यक्तिगत भाव में विजिट करिछि आपण मैंने देखिबे से माने कोनोसी टेक्निकल पर्सन नुहंती कोनोसी साइंटिस्ट नुहंती किंतु आमर कॉफी उन्नयन ट्रस्ट आउ कॉफी बोर्ड रो वैषयिक सहायता नहीं कि से माने एभलिया भाव में कॉफी उत्पादन करिसंती चारा उत्पादन माने जे कहीं देखिले खुशी हो जिवे। आपण देखि पारुथिबे तळे जो नर्सरी अछि गछ गुडाक अछि केते छनछनिया है कि केते बढ़िया हेछि। एटा हमर लास्ट ईयर रा स्टेटसटा थिला जे आमे 6टा ब्लॉक जोटा कि कॉफी जोठी हमर हुए गोटे हैला कोरापुट लक्ष्मीपुर नंदपुर सेमलीगुड़ा दशमंतपुर आउ लक्ष्मीपुर यही 6टा ब्लॉक रे आमर कॉफी रोपण करा जाइथिला आउ ये 6टा ब्लॉक रे माँ माने स्वयं सहायिका गोष्ठीर माँ माने कॉफी चारा उत्पादन करथिले। मोट आमर 9,01,184 कॉफी चारा उत्पादन करी आमर कॉफी उन्नयन ट्रस्ट को बिक्री करथिले जहाँ बाबद रे कि से माने 1,13,08,076 टंका पाइथिले। एटा टोटल टर्नओवर आमे जदि लाभ को जिबा लाभ केते पाउछंती देखिबा। एटा एवरेज टर्नओवर 2 वर्ष रे से माने पाइछंती 2 वर्ष रे एवरेज माने वर्षकर हिसाब निया हैछि 1,26,50,000 टंका माने 2 वर्ष रे 2,02,5 कोटी टंका से मानकर टर्नओवर हैछि माने तांकर आय हैछि। ये जो 5टा ब्लॉक रो माँ मानकर सर्वमोट ये जो 200 जन माँ इनवल्व होइछंती आय होइछि एवं तांकर यदि एवरेज प्रॉफिट देखिबा 2 वर्ष रे तांकर 24,75,000 माने पाखापाखि 50 लाख टंका 2 वर्ष रे लाभ पाइछंती माने एमती कौन सी व्यवसाय नहीं जो थिरे कि एते संख्या रे पाई परे पुणी एसियोर अछि एटा
एसियोर अच्छी कौन सी कौटी जीवाई पड़ोनी क्या सहित मार्केटिंग लिंक एडिशनल आरंभ करने पड़ोनी डील करने पड़ोनी आमर सरकार उद्यम आमर मंजी पाईगले वैषयिक सहायता पाईगले तथा से मैंने कॉफी चारा को सही बिक्री कर एटा कोरापुट माँ मैंने करिसेंती एठी अन्य जिलार जो माँ मैंने भी अच्छंती मु तांकु अनुरोध करी से मैंने भी ए भलिया इनिशिएटिव नियंतु आउ ए कॉफी चारा उत्पादन करी लाभवान हुंतु। आ गोटे कथा मु कहूची ए माँ मैंने जो मैंने कॉफी उत्पादन करथिले कॉफी नर्सरी चारा से मैंने स्कॉच अवार्ड रो सेमीफाइनाल अवार्ड पाइछंती एटा तार सर्टिफिकेट ता कोरापुट माँ मान से गोटे जोरदार करताली हो। थैंक यू समस्त को धन्यवाद आउ मते भलिया गोटे फोरम रे डाकी कि किछि कहबा सुजोग देइथिबारु मु कृषि विभाग कृषि तथा कृषक सशक्तिकरण जे डायरेक्टर जल विभागिका डायरेक्टर मृत्तिका संरक्षण तथा जल विभागिका उन्नयन से मते व्यक्तिगत भाव में चिठी करी एठिकी डाकी मु मोर हृदय कृतज्ञता जनाऊँगी आपण मैंने जो मैंने कि एठी बसी मते उत्साहित करिसंती तथा मो कथा को धैर्यर सहित शुणी ताकू उपलब्धि करिसंती मु तांकू कोटि कोटि प्रणाम तथा धन्यवाद जनाऊँगी। नमस्कार। मैडम को उत्साहपूर्ण अभिभाषण पे मैडम को अनेक अनेक धन्यवाद। मु आमर जो मैंने अच्छा सफल चाषी भाई भौणी मैंने विशेषकर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जेपरी आमर मैडम कहले माँ मैंने किपर निज उद्यम तथा मिशन शक्तिर सहायता द्वारा एवं यही योजनार किपर सफल रूपायन कर विषय आमको सम्यक भाव में कही मैडम को अशेष अशेष धन्यवाद। ताछड़ा मैडम जमती कहले आमर कोरापुटर भौणी मैंने स्कॉच अवार्ड सेमीफाइनालिस्ट अवार्ड पाई से अनेक अनेक अभिनंदन आम डिपार्टमेंट तरफ बर्तमान आम गहन उपस्थित अच्छा अनेक सफल चाषी एवं एसएचजी माँ भौणी मैंने तो प्रथमे मु डाकिबा चाहिए एवं निजर अभिज्ञता शुणा करेंगा ग्राम एवं ग्राम पंचायत कोरापुट जिलारो समस्त मोर नमस्कार। समस्त मोर नमस्कार सब नमस्कार। यही 2 वर्ष आम फास्ट वर्ष 1,60,000 चारा बनईलु ए वर्ष 70,000 चारा भी बनईलु। प्रथमे आम मंजी लगेगी से 45 दिन रे बटरफ्लाई है परे ताकू आम सेकेंड बेड को माटी बाली खत मिसेकी जरे भर्ती करिकी ताकू रोपण करिथिलु। तो आमर 9-10टा एसएचजी माँ मैंने मिसिकी करथिले सेमानेगर घर भरण पोषण 6 मास 7 मास काल से मैंने निजे काम करिकी भरण पोषण करि पारिथिले। से माने दुख कष्ट चलिबा लोक मैंने आमर काम करी कॉफी चारा लगेकी से माने कॉफी चारा उत्पन्न करिकी से माने निजर परिवार को भरण पोषण करि पारिथिले। विदान होची समस्त मोर नमस्कार। आम रीना मैडम को अनेक अनेक धन्यवाद। वर्तमान आम घर उपस्थित अच्छा मैडम राजेश्वरी रेड्डी जे कि ओनर मधु एग्रो प्लांटेशन केलार कॉफी कोरापुट आछंती से वर्तमान आपण को कहिबे इन्वॉल्विंग ट्राइबल वुमेन इन फार्म लेवल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ कॉफी रो प्रक्रियाकरण एवं तार मार्केटिंग उपरे वक्तव्य रखिबे मैडम राजेश्वरी रेड्डी। मैडम प्लीज।
adjust କରିଦେବା ओके समस्त मोर प्रणाम कॉफी चासी भाई भौणी आउ माँ मान समस्त मोर प्रणाम आगे धन्यवाद जनाऊँगी डायरेक्टर डीएससी और एवं डब्ल्यूडी डायरेक्टर चेयरमैन को कि मत ये आमंत्रण करले तापर आमर जॉइंट डायरेक्टर को भी धन्यवाद जनाऊँगी और आमर गौरवनीय एसएलओ साहब कोरापुट कॉफी बोर्ड जो मत ये अपॉर्चुनिटी देले ये आसिक आपण समस्त मु चाषी हिसाब रे कॉफी चाषी महिला चाषी हिसाब रे और कॉफी एंटरप्रेन्योर हिसाब रे मो एक्सपीरियंस आपण सहित शेयर करने को ये गोटे अपॉर्चुनिटी देवाई समस्त को धन्यवाद आगे मु गोटे प्रश्न करा चाहूँगी समस्त को केते लोक ये कॉफी पीउचंते एबे कोरापुट रे कॉफी फेमस है गलानी देश विदेश रे कॉफी समस्ते जानले कोरापुट कॉफी माने कोन तो आम भी आगे कॉफी पीवा कथा आम भी अभ्यास करवा कथा सो समस्त को अनुरोध कर निजे कॉफी घर बनातु कोरापुट कॉफी बनातु बनईक पीयंतु पीला आप जानवे कौन आम प्रोड्यूस करुचे आ कहीं लोक आमर कॉफी पसंद करते आमर आमे हला खाली महिला माने ओन्ड आमर प्लांटेशन केलार गाँव रे कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रु आसी मधु आग्रो प्लांटेशन रु आमर ब्रांड हला केलार कॉफी आटा केमती है आमर आप जो लोगो देखुंट आम लोगोर भी आमर खाली वुमन आम खाली लेडीज मानकर ही गोटे समूह का बागबारे आम सब समस्त इनवल्व करी आम कॉफी चाष 28 इयर्स रु आम ये करुचे और जो प्लांटेशन आम करेलु आम बापा माँ जो स्टार्ट करथिले तापरे आम ताको बड़े बड़े चललु तापरे एबे करुचे आम स्पेशलिटी कॉफी आम करुचो स्पेशलिटी कॉफी माने कौन कि नॉर्मल कॉफी माने कौन यहाँ आम जानवर अच्छे स्पेशलिटी कॉफी माने जोटा आमर जो स्पेशलिटी कॉफी एसोसिएशन रो जोटा स्केल अच्छे 100 पॉइंट रु 85 पॉइंट अधिका हेले से जाऊे स्पेशलिटी कॉफी और सेटा आम केमती कहीं को करबा स्पेशलिटी कॉफी आम चाषी हिसाब रे चाषी मान सब हिसाब रे आमर कौन मेल गोल है आम केमिति भल पैसा कमाइबा सेटा मोर को आगे देखबार अच्छे खाली गछ लगेदेलु से फल देउची 9 मास को ताको छाड़देबा सेमती हला हबनी आमर मेन गोल है आम केमिति ताको क्वालिटी बढ़ाइबा क्वालिटी बढ़ाइले आमर भल पैसा मूल्य आम पाई परबा मूल्य पाई परले कोन हबा आम घर में तो सब भल हे प्लस आमर अनेक लोक को भी आम माने चारा आम दे परबा समस्त लोक लाइवलीहुड भी आम सपोर्ट कर परबा जेमति आम एबे कर पारुछ आज आमर फार्म रे आज माने मोटामोटी 99% खाली वुमेन चाषी वुमेन माने ट्राइबल वुमेन नॉन ट्राइबल माने भी आम काम करछंती आम अंचल रे केलार कॉफी नुए बाकी जो अंचल 4-5 गाँव जो अच्छा समस्त महिला मैंने एत वर्ष आम पाखे कम कर शिखिले आउे आम क्वालिटी केमती इम्प्रूव कर फोकस करें आउट क्वालिटी इम्प्रूव केमती हम ना आम प्रोसेसिंग भल कला हम से प्रोसेसिंग केमती हम प्रोसेसिंग आम हार्वेस्ट टाइम जिते आम मंजी तोड़चे से सब पाचिलाटा तोड़वा तापर बाछवा बाछी देकर आम सब प्रोसेसिंग रे आम जो फर्मेंटेशन आम जो करुचे माने जो जिनस माने छोट छोट जिनस एगुड़ा सब केते घंटा आम करवा ताले को फ्लेवरटा बाहर ये सब आम शिखुचु शिखिक आम करोचु करले कहीं आमर जो मूल्यटा आमर मुझे सत कथा आम जो 300 टंकार आम आगे बल्क जे बिकुलु एबे 550-600 रे आम किले आम जाऊँगी सेटा भी ग्रीन बीन हिसाब रे मु रोस्टिंग को आउट जाइनी तो एमती माने फार्म लेवल भी आमर आप समस्त माने जदि प्रोसेसिंग जब इम्प्रूव करवा ताले क्वालिटी इम्प्रूव हेल्ले आमर आपणकर मूल्य रे भी भल पाइबे वैल्यू भल पाइबे आमर आपणकर कप क्वालिटी भी भल आसबो सो सेटा फोकस कले सेटा समस्त पाइ भी भल और आमर माँ मान जो भौणी मैंने जहाँ गाँव रु आसुँच आम सब वर्ष वर्ष आमको ट्रेनिंग दिया भी केमती करा प्रोसेसिंग केमती हम तापर केमती टाइप बहुत टाइप कॉफी आम करुचे आम कर हानी कॉफी करुचे और तापर नेचुरल्स वाले गोटे कहुचे जोटा मंजी खाली भल भल मंजी सब बाचिक आम सुखाऊचे आपर आम फर्मेंटेशन स्पेशल आम करुचे तो ये सब प्रोसेस करमर कॉफी एवं
ग्रीन कॉफीटा आमर खाली जाइए बाहर को जाइए यूके भी जाइए आपर अमेरिका भी जाइए ए वर्ष सो तापर आमर जो बीन्स एवं लोकल रोस्टर जो अच्छा इंडिया रे भल भल बड़ रोस्टर मैंने अच्छा से भी आम बीन्स गोटे ग्रीन बीन्स नौकरी आपर आमर मार्केटिंग को आम देखिले मार्केटिंग पॉइंट को गले आम रोस्टिंग करचे कॉफी बीन्स रोस्टिंग करी आम निजे आम यूनिट बसईचु आम फार्म भितर एका बसईकरी आम लगे तो बर्तमान ए लोकल माँ मान को भी आम ट्रेनिंग देचे केमती रोस्टिंग करेंगे केमती कौन पाउडर केमती कराहब से सब तो आम फोकस करके आम कराऊच कराइले कौन हम एथर वैल्यू आमर आहरी अधिका हो गला आमर जो ग्रीन बीन्स रू आम जो बिकुले एबे रोस्ट करके बिकिले आहरी मूल्य आम पाइबा जोटा आम 500 टंका आम पाउछु ग्रीन बीन्स बिकिकी एबे रोस्टेड बीन्स जो मुझे बिकिले एबे मोर 1000 टंका मुझे पाउछु एबे किलो हिसाब रे तो सेमिति आपण माने जो चाषी मान अच्छे समस्ते आपने जमती फोकस आपण करते जे जमती केमिति आमे ता वैल्यू बढ़ाइबा पे केमिति आमे चेष्टा करबा तो प्रोसेसिंग रे करंतु तापरे आपण सब फोकस करेंगे फोकस करके आपण करंतु आ ब्रांडिंग करंतु आपणकर ब्रांडिंग करले आपणकर भल हम निज निज ब्रांड करंतु ब्रांड करके आपण मार्केटिंग आपण करि पारबे तो एतिकी मु कहबा के चाहूचे और आमर जो महिला मान को भी आम ए फ्यूचर प्लान आम कौन करचे आम जो लोकल जो लोक केमती अच्छा तांको को आम ट्रेनिंग भी देवा चाहूँ जो 10th स्टैंडर्ड जो पाठ पढ़ुंट तांको आम ट्रेनिंग देबू जे केमती बारिस्तारे केमती से करें कॉफी केमती से ब्रू करें ब्रू कर पारे तांकर भी कोटी कैफे रे से काम करें सेटा गोटे आम फोकस रे आम अच्छु करने सेटा सब फैसिलिटी आम फार्म भीतर अच्छी केमती कौन करने सो ये सब अपन वैल्यू एडिशन रे फोकस करले अपन समस्त को भी सक्सेस हम और सब आप भल करें और से मुझे कहीकि समस्त धन्यवाद जनाऊँ अनेक धन्यवाद मैडम विभिन्न स्तर कॉफी उत्पादन और कॉफीर प्रक्रियाकरण उपर सम्यक आलोकपात कर विभिन्न क्यों स्टेज में कॉफी नहीं तार किपरि प्रक्रियाकरण कले आम सक्सेसफुल हो पार से विषय संक्षेप में कही मैडम को अनेक अनेक धन्यवाद एवं आम गण में अच्छा मैडम निशा थोमस सी होती प्लांटर कम ओनर फ्रॉम अनाईकोडु इस्टेट कर्नाटक सी आपण को कहे पोस्ट कोविड एरा रे पोस्ट कोविड समय किपरि आमर इनोवेटिव कॉफी प्रोडक्ट्स संपर्क में आपण आलोकपात करेंगे नाउ मे रिक्वेस्ट मैडम निशा थोमस for a brief deliberation on the topic a success story of bean to cup and innovative coffee products for post covid era. Madam, please. Good afternoon. I am Nisha from Kodagu district in Karnataka, and I don't speak Odia, so I would like someone to translate what I am saying to you. I would like to talk to you about value addition in coffee, how you can make different products out of coffee and market it. I will briefly tell you my own story and how in the last 3 years we have created a name for our coffee, our plantation, and I will also introduce you to some of the different innovative coffee products that you can make out of what is otherwise waste for you. You can hear? About our plantation, we are a small 50-acre coffee farm. It's next to a reserve forest. We mostly grow Robusta coffee there, very less Arabica. मैडम कर कूर्ग जिले में गोटे 50 एकर गोटे इस्टेट अच्छी जो से रोबस्टा कॉफी उत्पादन करते बहुत कम अरेबिका कॉफी एवं चाष कर
We mostly produce commodity coffee, which is bulk strip picking of coffee, and we sell it to big wholesale buyers, and they mix it with coffee from other different, many farms like us, and it is sold. You never get to know where your coffee is sold, who's drinking it, how good your coffee is. We always wanted to know what an end customer, a buyer thought about our coffee. So this is where our interest in doing single origin and specialty coffee started in 2020. We started doing specialty coffee processing in 2021, and this is our third harvest where we're doing specialty coffee processing. मैडम 2020 रे ये प्रक्रियाकरण एवं उत्पादन स्टार्ट करथिले 2021 रो प्रोसेसिंग स्टार्ट करथिले एवं एटा तांकर तृतीय वर्ष जोथरे से माने तांकर स्टेट को आगो को नेबा को चाहउचंते Do you want to tell एवं them से माने why? ह्यूज परिमाण एवं अनेक बड़ वॉल्यूम रे समान उत्पादन करते जोटी कि समान होलसेलर मानन को निजर उत्पाद को विक्रय करथांती And in the last 2 years, we have been able to sell our coffee to some of the top coffee roasters in India, specialty coffee roasters in India. The first year itself, we sold to Blue Tokai, KC Roasters, El Bueno, and a lot more coffee roasters last year. And then this year, we have added, I think, 11 roasters across the country we are selling to, and at some point in the future we would like to explore the international market as well. Okay. I'm told that you're able to understand what I'm telling you, so I will continue. So this is the Anekado team. Korean George, my husband, he's the planter. I am Nisha. I primarily do, after picking the coffee, the processing and the marketing of our coffee. That's what I handle. Anaika, she's 10 years old. She's my daughter, and we have named Anekado after her. And we have a 2-year-old dog called Bella. That's the little Anekado team. So that's my husband and daughter. So Korean is a 4th generation planter. This plantation was in the family from the 1950s. And we were both working in Bangalore. And we moved to the coffee plantation in 2020. Why I want to tell you about me is I came to coffee only 3 years ago. My knowledge of coffee is only 3 years old. Before that, I was working in companies like Amazon, D. Shaw, Bank of America. 15 years I spent in the IT sector, and I moved to the farm in 2020. I started getting interest in coffee because I live on a coffee farm and surrounded by coffee. So I started I started researching about it, online forums. Right now, I think from 10 years ago to now, we have the power of connectivity. There is internet, there is network. You can get information from so many different sources. You can harness that information, and that is what helped me. Like I'm in Karnataka, and Raji here is in Koraput, but I'm connected with her. We exchange information. We teach each other new things. We learn new things from each other. So this is how I've been able to increase my knowledge of coffee. And this is precisely why I am telling you about myself, because 3 years ago, I didn't know anything about coffee. In fact, Arabica and Robusta plant, if you keep it in front of me, I couldn't tell the difference. But now, I am able to learn more and apply that knowledge in coffee processing. So in addition to coffee, I also grow mushrooms, and we do some beekeeping on our farm as well, primarily for pollination and crop yield in Robusta. So briefly, I mean, you're all coffee planters, so you know what a coffee cherry looks like and what the different parts are. There's the coffee bean. There is silver skin around it. On top of that, there is the papery layer, parchment layer, which you peel and you get this bean. And on top of that, there is a sweet, sticky mucilage and pulp. And on top of that is the skin. So this is the coffee cherry. I'll
quickly tell you what specialty coffee is. Rajeshwari touched upon it briefly. So what you do, what's a specialty coffee? The coffee, when you evaluate it by guidelines by an international organization called SCA or CQI, anything scoring above 80 can be sold as specialty coffee. How do you get to above 80? It is different in the way you pick. Now, in the first picture, if you see, it is fully red. Instead of strip picking the full coffee, greens and reds and dried coffee, you selectively pick only ripe ones. In that, again, you further sort the coffee. And as you do more careful processing of coffee, your coffee score will automatically go up. Typically, as a commodity coffee farmer, you want to dry your coffee very quickly. You put it in the sun, and within 3 days, 4 days, you want to dry, and then you take it, you bag it, and you sell. But in specialty coffee, you want your coffee to dry slowly. So you dry it slowly so that the flavors in the coffee stay. And in specialty coffee itself, there are different ways of processing your coffee. The first image is naturals, cherry, the most common way that all of us process our coffee. Second image is honey processed coffee. So you take the coffee bean, remove the skin and that sticky sweet substance, you dry it along with that. It gives a very different taste. That's called honey sun-dried coffee. Third one is an image of fermentation. In fermentation of coffee, different things can be done. You can ferment the coffee by itself. You can add things like yeast, which change the flavor of the coffee. You can ferment it with fruits. I mean, a lot of farms in India are fermenting coffee with papaya, banana, pineapple, different things. So you can experiment and you can bring out different flavors in coffee. There is a good demand for these sort of innovative processes in coffee. Now, product potential of coffee. Now, the coffee bean itself, you know, first and foremost is coffee as filter coffee, instant coffee, and then nutraceuticals. It's also used in a lot of health supplements. It's used in cosmetics. So did you know that coffee has something which helps in inflammation? So your under eye puffiness, to a lot of things for your skin cosmetics, coffee is used. It's used for weight loss. So coffee has some compounds like chlorogenic acid and a few other things which actually help in weight loss. In a supermarket, I saw green beans of coffee being sold for weight loss. And it was 2,000 rupees a kilo. So they said you grind this coffee and you drink and then you lose weight. And flavorings, different coffee flavored, different essences, etc. It's also added as a flavoring agent in alcohol and in energy drinks. Energy drinks like Coca-Cola, etc. Coffee is one of the most important products that gives it which keeps you awake. Silver skin, there is a thin papery skin on the bean. Now that can actually be used as a fuel. You can burn it and it makes fuel. There is fertilizers, again that is used in cosmetics, and it has a lot of fiber. So people are also converting that into foods which can be used as a dietary supplement for fiber. Parchment, the papery layer that surrounds the bean, that again is used as biofuel. You can use it as a fuel. Mulch, I mean coffee, you know, when you're growing, you want the soil moisture to be remaining there, so you use it as mulch, so the moisture remains. You use it as fertilizer, and you can also grow, it is also used as a growing medium. You can mix it with soil and compost, and you can grow different things, like mushrooms will go beautifully in it. It can also be powdered and made into furniture, particle board, like how you have MDF furniture. You can compress it and make it into furniture also. And tableware, like your plates, cups, glasses, mixed with other things. Parchment can actually be used as tableware. And the husk, when you take your coffee and you pulp your coffee, the skin that remains, that you can make compost out of it. The most simple thing is make compost, you add it back into the soil, it makes your soil fertile. You can make biofuel out of it. You can make pellets.
You compress it, dry it, compress it, and you make pellets, which you burn as fuel, firewood, instead of firewood, etc. One thing that I want to tell you is cascara tea. So in some countries, like in Yemen and in some of the African countries, this skin that we generally throw away is made like a tea. It doesn't taste anything like coffee. It's brewed like a tea, and that's called cascara. Then the other things, the innovative products you can do are jams. You can make jam out of it because the pulp is sweet, jellies, syrups, and you can make kombucha. You ferment this with, what do you call it, with something called a SCOBY. It's bacteria and yeast together, a sugary drink, to make kombucha, which is very good for your digestive system. You can make different flavored drinks, cascara flavored drinks. Their alcohol, there's actually, I saw an ad for a, I think rum or a gin, which is flavored with cascara. And then again, it makes a beautiful growing medium. I've tried to grow mushrooms on coffee husk, and mushrooms grow on it as well. So, sorry, go ahead. Oh, this one? They wanted to explain. ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆମର କଫିର ବିନ୍ ଛଡ଼ା କଫିର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ରହିଛି ତାର କିପରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତାହାର ବଜାର ଦର ଏବଂ ତଥା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଧିକ ରହିଛି। ତ ଆମେ ଯେଉଁଟା ନର୍ମାଲ କଫି ଆମେ ଖାଲି ପିଇବା ପାଇଁ କଫି ତିଆରି କରୁଛେ ତା ଛଡ଼ା କଫିର ଯେଉଁ ବାକି ଅଂଶ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଚେରିର ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିକି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ କଫି ବିନ୍ରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇପାରିବା, ଯେମିତି ଆମେ କଫି ପାଉଛେ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଫି ମଧ୍ୟ ପାଉଛେ ଏବଂ ତା'ର ଆମର ମେଡ଼ିସିନ ତଥା କସ୍ମେଟିକ୍ ଏଇସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତା'ର ବହୁତ ୟୁଜ୍ ରହୁଛି। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ଲସ୍ ପାଇଁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ସେହିପରି କଫିର ମଧ୍ୟ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରି ଅନେକ ଉପାଦେୟତା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲେଭରିଂ ଏବଂ ଫ୍ଲେଭରିଂ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଫ୍ଲେଭର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କଫିର ଅନେକ ଉପାଦେୟତା ରହୁଛି। ସେମିତି ଯେଉଁଟା ଆମର ଚେରିର ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ରହୁଛି ଆଗ ଚେରି ଆନାଟୋମି ହଁ, ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛେ ଚେରିର ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ୍ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚିତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ନେକ୍ସଟ ହଁ, ଯେଉଁଟା ସିଲଭର ସ୍କିନ୍ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛେ ଆପଣଙ୍କ ଫୁଏଲ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ଆପଣଙ୍କ ସାର, ଜାଳେଣୀ ଏବଂ କସ୍ମେଟିକ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଡାଇଟେରୀ ଫାଇବର, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଇବାରେ ଯେଉଁ ଫାଇବର ରହୁଛି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅନେକ ଗୁଣ ରହୁଛି। ତାପରେ ଯେମିତି ଆପଣ ସେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାର୍ଚମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଲେଖାଇଥିବେ ହଁ, ଯେଉଁଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ରହିଛି ପାର୍ଚମେଣ୍ଟ, এই অংশটা দেখুন তার মধ্যে আপনার উপাদেয়তা রয়েছে বায়োফুয়েল এবং মলচিং মানে আপনার যে চাষ করলা পরে যেমন জমি আচ্ছাদন করা যে আপনার জিনিস ইউজ করছেন মলচিং, ফর্টিলাইজর, সার তথা গ্ରୋଇଂ ମିଡ଼ିୟମ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଚାରା କିମ୍ବା ମଞ୍ଜିକୁ ଆପଣ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତରଳ କିମ୍ବା କଠିନ ଯାହା ବି ହେଇଥାଇପାରେ ସେଇ ଗ୍ରୋଇଂ ମିଡ଼ିୟମ୍। ତାପରେ ଟେବଲ୍ ୱେୟାର ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ତାହାର ଉପାଦେୟତା ରହୁଛି। ପାର୍ଚମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣ ଧଳା ଅଂଶଟା ଦେଖିଲେ ଚେରି ବିନ୍ର, ନେକ୍ସଟ ହସ୍କ, ହଁ ଯେଉଁ ବାହାର ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ହସ୍କ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ। ତାପରେ ବାୟୋଫୁଏଲ୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋ ଜାଳେଣୀ ହିସାବରେ, ଫୁଏଲ୍ ପେଲେଟ୍ସ, ଚାହା ହିସାବରେ କାସ୍କାରା ଟି, ଜାମ୍ସ, ଜେଲି, ସିରପ୍ରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲେଭର ବିଭିନ୍ନ ପାନୀୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛେ। এইটা হচ্ছে আপনার ম্যাডাম সংক্ষেপে যেটা কহিলে চেরির বিন ছড়া যে অংশ গুড়াক রয়েছে যেমন আপনার চিত্রে দেখিপারে তার বিভিন্ন অংশর উপাদেয়তা বিষয়ে ম্যাডাম সংক্ষেপে কহিলে। Okay. So this is one experiment that we did last year. It is called Beyond the Bean, looking at coffee
outside of the coffee bean, what can you do with coffee? बीन छड़ा जमी आम आगुरी कहले बीन छड़ा बियॉन्ड द बीन माने आपनकर कॉफीर खाली बीन को आम यूज करछे कॉफी प्रोडक्ट्स पई तो ता छड़ा आपनकर कौन कौन स्कोप रही कॉफीर जो जहाँ भी अंश रही आप केमती यूज करेंगे से विषय बर्तमान से अध्ययन कर So this was a pack of 4 different things that we sent as an experience box. The idea was to open the end customer. When you think coffee, you think of it as a milk and sugar and a drink which you drink, which is a stimulant, which is a certain way, the beverage that we and all drink. But have you looked at coffee in a way that is not the usual idea we associate with coffee? So that was the idea. How can we open our taste buds to different products from coffee which are not made of the bean? That was the point of this exercise. So this is the cascara spread. We told you about the coffee skin. After pulping the coffee, the skin, we cook it down with sugar. You grind it in a mixie, cook it down with sugar, and try and taste it. It's really good. Add a little bit of lime in it and taste it. It's a wonderful jam. It's like a jam. You can use it as a spread. Fermented the coffee skin, cook it down with sugar, and we left some pieces of skin in it because the flavor is nice, and this is one thing that we tried. यहाँ गोटे कास्कारा स्प्रेड से तैयारी जोटा कि आपनका जाम भाया जो कॉफी जो स्किन पार्टा रोचे आपनकर पल्प बीन पर जो स्किन पार्टा रोचे सेटा को से सुगर चीनी सहित प्रक्रियाकरण करके गोटे जाम भाया जिनस तैयारी कर जोटा कि से कास्कारा स्प्रेड बोली कहते Robusta blossoms. So coffee blossom tea is not very popular in India, but in other countries people have blossom tea. It is like how you make your chai. Hot water, put the blossoms in it, brew it, and then drink. It's a very light, like green tea, something similar to green tea. So you pick the flowers after blossom. You shouldn't let them fall to the ground. You pick them up, but you have to give it time for the flower to fertilize, otherwise you lose your next year's crop. So after you think the same day later in the evening, you can pick them off the plant and dry it slowly. There is a market for coffee blossoms as well. नेक्स्ट प्रोडक्ट हूँ रबस्टा ब्लॉसम्स जोटा कि जो रबस्टा कॉफी आमर जोटा हाँ हाँ अरेबिका कॉफी रबस्टा और अरेबिका जो 2 प्रकार कॉफी आम उत्पादन करुचे तार से माने ब्लॉसम पार्ट को लेकिन निर्दिष्ट टाइम रोचे तार ताको पिक करके से माने खरारे सुखाउछन्ते एवं सेटा को से माने सन ट्रैप खरारे सुखैके से माने रखुछन्ते जोटा कि परे से माने यूज कर पारुछन्ते ब्लॉसम टी माने चाहा रूप में मध्ये यूज कर जेमते हम ग्रीन टी यूज करू से परे ब्लॉसम टी एवं ताको सिरप हिसाब रे मध्ये से माने यूज करूछन्ते. So the most popular byproduct of coffee is the coffee skin. So I thought I'll show you what a market is there in for the different cascara products. Cascara, which is called the skin of the coffee in Spanish. It is called kishre, a drink called kishre, like how we say chai. They make something called kishre with the coffee skin, some spices, and they drink it like tea. But now, because of how popular it has become, there are all these products. The first picture is cascara tea brewed like chai. The second one is cascara iced tea but flavored with coffee skin. The third one is cascara jam on your toast, breads, filling for your bakes, etc. The fourth one is coffee flour, atta made of powder of coffee skin. It is high in dietary fiber because there is a lot of fiber in it. Health benefits. People are replacing, let's say, 10% of your atta or 10% of your maida with coffee flour. Then kombucha, brewing this, making a fizzy drink. Then the other one is soda, cascara soda. Then jelly, syrup. Cascara in this is something, a company called Swa in Bangalore sells it. Cascara and hibiscus made into a syrup. So you mix it into your other drinks, like you can mix it with water and make a drink, or you mix it with other things and flavor it. So these are only a few of the products that you can make out of coffee skin.
The only thing you have to be careful is, unlike coffee bean, which you're taking from inside the coffee fruit, the skin is what we are consuming directly. So make sure that there is no pesticides and fertilizers, etc. applied directly to the skin, because we are consuming it as it is. There are some guidelines on how you can process it, and it has to be processed hygienically. But otherwise, these are some of the products that you can explore. Yeah, done. It's done. You want to explain this? You want to explain this? Done. No? Okay, so the conclusion, the possibilities that you can create products from coffee are endless. All you need is innovation, how you can develop a product, and a good marketing strategy on how to market these products. I'll leave you with a few thoughts. Always have curiosity. I mean, you have been doing farming a certain way. Always think, how can I change it? How can I make it better? The other thing, ask why not more often. Why can I not try this? What happens if I try something? So try something new. Never stop learning. Learn from each other. You have the power of the internet. Utilize that. Communicate with people across the globe. Internet makes it possible. Collaborate. And I see in Odisha, it's beautifully being done. Self-help groups and empowerment and so much support from the government. So collaborate. Create a community of like-minded people. Your self-help groups are a first great example. Continue doing that. And don't be afraid of failure. The sky is the limit. You can do whatever you set your mind to it. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your thoughtful deliberation on the scope of beyond the bean, the scope of coffee beyond the bean. मैडम को आम मैंने धन्यवाद देवा आम मान बहुत संक्षेप बुझे जे कॉफीर बीन छड़ा जो सब अंश गुड़ाक रही तार उपादेयता कौन और से आम कौन कौन उत्पाद व्यवहार कर किपरि मार्केट रे प्रक्रियाकरण कर बर्तमान आम घर सफल चाषी भाई भाई मान आम शुणा डाकी नहीं आम घर पूर्णचंद्र गोलारी महोदय को सी आसुंच दुरुबा छटुआ नंदपुर ब्लॉक कोरापुटरू मोर ना पूर्णचंद्र गलरी गाँव इलानी डुरबा पंचायत इलानी छाटुआ ब्लॉक एटला नंदपुर डिस्ट्रिक्ट एटला कोरापुट राज्य ओडिशा मैं कॉफी 2 एकर लगाइली अच्छी कॉफी बरस के 2 लाख लगा बिकिटली गोलमरीचू बर्तमान 10 फुट लगाइला আছে गोटे गोटे कली आइलानी सेटा आसे नाई था मोर आशा करी गोलमरीच 4 लाख 2 एकर को 4 लाख मैं बिकबी बोली आशा करी किंतु एबे वर्तमान 2 एकर कॉफी लगा गवर्नमेंट दे आछे वाटर सेट मका देरला सिल्वर मका कॉफी मूर्तिका शरण विभाग तरफ देरला कॉफी मका देतिबारु मैं आज 2 एकर कॉफी लगाई 2 लाख एवं वर्तमान बिकी ए वर्ष मैं सरकार को बा कर्मचारी को मोर धन्यवाद देवी मते एते सुविधा देतिबारु बोलो बाबू आमर जो बाबू को स्कूल +2 जाक साइंस रे पढ़ाइली आ वर्तमान एबे छोट बाबू 6th क्लास रे पढ़वा जाऊँगी मुझे एतकी पैसा मत मिलवा असुविधा रोला माने पैसा मिलू मत खुशी लगुच एतकी कही मोर धन्यवाद शेष करुच्ची धन्यवाद वर्तमान आम गहण आसी पहुँची आम अतिथि डॉक्टर सुजाता मुथन्ना हेड डिस्ट्रिक्ट एग्रो सॉल्यूशन एंड कंसल्टिंग कर्नाटका नाउ मे आई रिक्वेस्ट श्री उपेंद्र साहा सर टू ऑनर आवर गेस्ट विथ मोमेंटो एंड उत्तरिया सर प्लीज
Our sir, Dr. Sangram Kasari Swai. Now may I request Madam Sujata to deliberate the to have a brief deliberation on the topic new ways interventions for marketing strategies and branding of coffee. Madam, please. Yeah. Is there a presentation? They bring it up. Okay. Good afternoon to you all. Good afternoon. Hello. Yeah. All right. It's wonderful to see so many people who are involved in agriculture, in coffee farming. And today being Makara Sankranti, I'm glad that we are starting off. I'm sure you're all not starting, but you've all started. But probably it's going to push it to a different level, right? And with all the support that you have out here, I've been talking to Mr. Saha. I've also been gathering some of the inputs that came in from the self-help groups, from Nisha's conversation, from Raji. I was just catching up on some of the things that I missed out. And you're having a holistic approach to coffee cultivation, right? So I'm going to take you, I'm going to ask you a question. Which is your favorite? It may not be about coffee. Is that all right? Yeah, you might want to translate it. I have a question for them. Okay, my question is, what has been the best thing that, favorite thing that people have bought here? Not here. Generally, what is it that they have enjoyed buying when they go to a restaurant or when they go to a shop? What do they like? मैडम आपण जानवाक चाहते आपन जितेबले कुआडे बाहर को जाती कुआडे बुलवा को जाती आपणकर कौ फेवरेट जिनस कौ प्रिय जिनसटा को they want to buy they want to buy or they take No, what has been a very good experience when they go to get some food or some article? आपण जिते किसी बुलिया को जाती कुआडे कि किसी जिनस किणा किणी करबो जाती सेतेबेले आपणकर सबुठु भल एक्सपीरियंस बा अभिज्ञता कौन से विषय मैडम जानवाक चाहते किए भाई भूणी आम जो अच्छा चाषी भाई भूणी मैंने किए जब कहवाक चाहते आपण अभिज्ञता विषय आप जो कुआडे बाहर को बुलिया को जाती से सब भल अभिज्ञता जिते आप कुआडे बाहर को जाए कृषि ओडिशा को आसुँच ये जे आपने कृषि ओडिशा को बुलिया को आसुँच बसी आप सब भल अभिज्ञता कौन टे जाए कौन है कहतु किए भाई भूणी आम गण अच्छा जब कहवाक चाहिए What's their favorite shop? Yeah, somebody is saying. Yes. माइक समस्त को मोर नमस्कार। सर्वप्रथमे मु जाजपुर जिला प्रशासन को धन्यवाद देवी, जाजपुर ब्लॉक को धन्यवाद देवी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को धन्यवाद देवी। जाजपुर जिला प्रशासन मत द्वितीय थर ये मंच को आनी मो 2020 मसीह मुझे अवार्ड पाई फिर द्वितीय थर मत ये सुजोग दे मु बहुत खुशी। आज कॉफी विषय बहुत किसी आलोचना है किंतु आमर यहाँ उपकूलवर्ती अंचल आमर आमर शैलकंजर आम फार्मफंड आम बेसी आधारित आम जिते फार्मफंड आम बेसी डेवलपमेंट करूँ फार्मफंड किमिति भाई टिके टिके फार्मफंड विषय मैडम पचार ना आम जो पचारू आप जो बुलवाक आस ये विषय पचारूँ कौटे बुलवाक आसते जो आसले कौन कौ दुकान सब भल दुकान को आप कौटा गले कि भल जिनस कौन किणिले से विषय मैडम जानवाक चाहते ये आमर जो टेक्निकल जिनस गुरा पड़ी टेक्निकल नहीं मैंने जहाँ एमती नॉर्मल सब ओवरऑल कृषि ओडिशा भी भूल जातु कुआडे एमती नॉर्मल आप बुलवाक जाइए आप कौन जिनस भल लगी कौन कौ दुकान को जाइए कौ भल जिनस आप किणी से विषय जानवाक चाहते एग्रीकल्चर सीड ऊपर मते बेसी भल लगे seed in agriculture they getting seed. Okay, so you like another seeds? Yes, please. Okay.
So which is the place you go for seeds? सीड किनिबा पई आपण आपण को जगह को जानते ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଆମ ଦିଦି ଜଣେ କହିବେ କୋରାପୁଟରୁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି Which shop is their favorite? कुहंतु कुहंतु को दुकान भल लगे कि को जिनस भल लगे आपन को से विषय कहतु एमती बुलिया जाइछन्ती केते कोन भल लगे आपन को ମିଶିକି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ପାଇଁ ଚା କା ଭଲ ଲାଗେ Okay, all right, great, thank you. One more shop. Can you tell me a shop that you like to go to? गोटे To buy दुकान किंबा anything. बाजार ना कहबे Favorite dukan. ଝିଅ ପିଲାକୁ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ଆକା ଭଲ ଲାଗେ Okay, all right, okay. Super, super. So, why do you like that sari shop? काहे के भल लगे आपन को साड़ी दुकान साड़ी किनिबा को काहे के भल लगे ସବୁ ଜାଗାରେ ପିନ୍ଧିକିନା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରେଷ୍ଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ they can go out with the sari by wearing sarees they can go out everywhere to good occasions that's why they Okay, all right. So, thank you very much. Thank you. What else do you want more than buying a sari for a wedding? ଆଉ ଖୁସିଟା ଆକା ବେଶୀ ଭଲ ସବୁକୁ ଦରକାର What? Okay, perfect. What will give you happiness in that shop? What gives you happiness in that shop? ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶା ମେଳା କରିକିନା ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ Okay, so happiness is not in the article that you buy. Happiness is in your heart, right? You feel good in your heart, right? All right, thank you. Thank you for your inputs. So I wanted to share one thing. I'll probably go to the next one. I'm going to, right. So whenever we buy products, and here we are talking about coffee. ହେଇଗଲା ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫୁନା What? ପଚାରିଲା ପାଇଁ Oh, you're welcome. All right, and I really like the courage with which you're expressing yourself, which is very important. All right, so you have coffee, you have saris, right? If you look at what we're seeing out here, you can just take your coffee to the market. You can sell your Arabica and Robusta just like they can sell a sari. The sari can be sold on the roadside. A sari can be sold in the shop, correct? Road में भी साड़ी बेचते हैं, shop में भी बेचते हैं. You like the experience in the shop, right? Same sari. So, if you look at this entire journey, you can take, and I'm giving the coffee example. You can take your coffee and sell it to a buyer, or you can make, which is like a commodity, right? But if you want to enhance the market value for your coffee, then you package it. Nisha spoke about packaging. All of us do different kinds of packaging, and we sell it in the shop. The next part of it is not for people to come to your shop, but for you to take your product to their doorstep. And that's where technology comes in, right? For marketing, technology is a big boon. So the third level is about delivering a service and not just selling a product. The fourth thing is what we see in some of these very, very beautiful shops. I love going to this place in Bhubaneswar, which is Kimji. I always go to Kimji because it's not just the silver that you buy out there. It's the experience. They make you feel good. The music is so beautiful out there. And that is where the journey of coffee is headed. It's not just a product. You can buy a product anywhere. But as people who are entrepreneurs, we have to deliver an experience.
an experience that will make people feel good in the heart. They go back, probably they might spend so much more in that shop than when they go to a smaller shop. Okay? But that is the difference. That is the difference. How can we as farmers or entrepreneurs provide a better experience for our end users? So now the focus is shifting from just the product out here, from the commodity, all the way to the brand. How are you going to create a brand for yourself, right? So that is what we're going to be talking about. And so, if you look at this entire thing, giving a product or selling a product is at the lower end of the pyramid or the graph that you see out here. But selling an experience is more important. So I'm going to ask you all a simple question. Think about it. When you're having your farmland, or when you're growing your coffee, what is it that you want to give to your end customers? Do you want to give coffee? Coffee in bags, coffee in pouches, coffee in tin boxes. All of these are different ways in which you sell, right? But are you going ahead and giving them an experience? And to give an experience, we need to understand what is it that's going to be meaningful for them, right? The people who buy might be old, maybe young, might be college-going students. It can be anybody. So we'll have to start looking at how do I cater to various kinds of audience and make sure that people start looking at it not just as a product, but as an experience, right? So with that, what we're doing here is we're jumping. There was something that was mentioned earlier, which is we've got to have the courage to ask questions. We have to be curious. We need to explore the market and all of it. And that is the change we need to bring in. And today being Makara Sankranti, I wanted to kind of share with all of you, bring the change from within you, and that starts with courage. Start experimenting and looking at what are the kinds of innovation that you want to bring into your market, into your product. How far do you want to take it? In order to do that, it's important to go to different shops, go to different people who are offering their products or their experiences or their services. We have to experiment. If we are only thinking that what we are doing or the brand that we have is the ultimate, then we won't be able to go beyond. And in this market, because this is a market where you've got to create a brand for yourself, it's important for you to ask some questions. So this is exactly what I did. I started off with, many years ago, I got married into a family which had coffee estates. And so they were selling coffee, and which was like a commodity. From then on, I started looking at, okay, how can I take the commodity and make a product out of it? You have a question? No, okay. So going to a product, and from there, I started looking at how do I make a brand. I have one of my brands out here. I brought it along to show you. How do you have your own brand? Then how do you deliver the service? Instead of people coming to buy it from you, how can you make it easy and give it to people at their doorstep? And eventually, it's about an experience. You have the Starbucks, you have a whole lot of examples out there. That's the way in which you can start looking at increasing the value for your coffee. Whether it is Arabica, Robusta, the different blends that you have, it's important for us to look at a market. It's not sufficient for us to just have a product. We have to start looking at how do you enhance the experience, because that's when the market value of your product starts going up. And when you do that, your ability to experiment with different things also increases. Okay? So here are some questions that I asked myself a couple of years ago when I got married here. So my first question is, is it pure functionality? What does my product have? It has Arabica, it has Robusta, it has different blends. There's customization, there is green coffee, there is, coffee decoction, a whole lot of them. Then I asked myself the question, is it at a commodity level? Is it
only that I have it in a box and then I go ahead and give it to people. The next question was, is it an ordinary product? How can I differentiate my product from somebody else's product, right? How can I differentiate? Is it a run-of-the-mill, just a boring, regular thing? It's a crowded market also. So how do I do that? The next question I asked myself is, when people are buying, why are they not buying more? Because there was a lack of the emotional connect, right? How do I build the connection? I ask people, what do you like about coffee? What do you feel when you drink coffee? So I start connecting with not just my own product. I start connecting with the end users. It's important to talk to your customers, call up your customers, all of that, right? So then the next question is, how can you get into an undifferentiated market? Yeah, you're going to be a part of the undifferentiated market. How do you create it? How do you stage an experience? Yeah, the question is, what do I want to do that's very different? Yeah. Then I have, how do I evoke emotions? So how do I tell people? And I'm going to give you a small little video after this to show how I used some of the things that I thought was very important for our brand to connect with people. And finally, how do I personalize these services and make this very unique? So on that note, these were my questions. Yeah, yeah. You'll have to click on that video. So click on the video. Yeah, I have a small video. So this is just to tell you how I differentiated the brand. We differentiated the brand Rustic, earth to soul. We wanted to bring in culture in a very, very big manner. I come from Coog, I come from the hills. So the second one, click on it. No? Okay. All right, no problem. So I'll send it across to you and you can share it with them. Can you go to the last slide, please? Go, go, go. Yeah. So I have one last slide, which is, you're probably not going to be able to see the font. It's about how can you bring in digital marketing. It's important to start learning technology. On one of my slides, I think I have a QR code. We may not be exposed to all of that technology, but it is not rocket science. We have to learn some of these things. It's important for all farmers, for all agriculturists to understand what is going on in the rest of the world. Don't stop yourself, because when we put constraints on ourselves, then we are not in a position to experiment and innovate. So these simple questions are about how do you understand where Google plays a role. I know the audience may not be completely aware of all of that, but there is always a starting point, and that is what I wanted to share with all of you. The sky is the limit, right? Don't stop at just growing coffee. Go ahead and give experiences to your end users, and that's what I wanted to share through Rustic Earth to Soul, okay? Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for your brief and thoughtful description. Now may I request Sri Upendra Sahar, SLO Coffee Board, for his brief description on role of women coffee farmer in planting, maintenance and harvesting of coffee products. Sir, please. स्वागत मु जनाई थी आउ थरे मु वेलकम करुचे जेते माँ माने अछंती भाई माने अछंती एटी एंड ऑल ऑफिसर्स फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑनरेबल डिग्निटरीज ऑन द डायस मु ओडिया रे ही एबे कहूची बिकॉज आपण को जानबार अच्छे एबे एते दूरी रे हमें आसिकरी कौन हमर उद्देश्य कि एठी हमें पाई परिबा तो माँ माने भाई माने ऑलमोस्ट ओडिशा कॉफी जोटा आमे कहूचु बा कोरापुट कॉफी जो नाटा आसीचे गत 3-4 वर्ष रे हमें से छोट छुआ भालिया स्टेज रे अछु मैडम एठी आसीचंती कर्नाटक रू से बहुत किछि कहले तार सार कौन माने मेन जो कथा कहले लास्ट रे हमें कौन से थी
को पॉइंटा घरे नहीं जाइपर। सुजाता मैडम आसिले से भी किसी पॉइंट कहले, रेड्डी मैडम किसी पॉइंट कहले, आम डीपीएम मैडम तो कहले पूरा उत्साह सांगे सबू एक्सपीरियंस शेयर करिले। मु टिके टच करी प्लांटेशन पार्टा हमर आदिवासी चाषी माने बा जो हिल एरिया रे अछंती जे ट्राइबल नॉन ट्राइबल सभे केमती काम करूछंती आउ महिला चाषी मानकर रोल केमती अच्छे। तो ए गुटे कथा हमें जानबार अच्छे, कॉफीटा गुटे दिनर चाष नुहे कि गुटे सीजन रो चाष नुहे कि गुटे वर्षर चाष नुहे। एटा जदि आपण थरे करिले पाखापाखि 20-25 इयर्स माने 20 रु 25 वर्ष आपण कॉफी रे जो लाभटा अच्छे पाई परिवे। ता उपरे जदि कॉफी करूचंती त पाखापाखि 40 वर्ष पर्यंत जो लाभटा अच्छे से आसीबो। तो माँ मानकर रोल केमती अच्छे एठी देखंतु। एठी मु देखली माँ से बैक साइड रे गुटे जोड़े माँ माने छन छोट छुआ धरिकरी आसीचंती। माने छोट छुआ को एते दूर पर्यंत से नहीं करी आसीचंती ता माने कोन से केयर से मन को पाई कामटा भी बहुत इंपॉर्टेंट। तार निज जो छुआ अच्छे छोट छुआ अच्छे से संगे संगे तार केयर तार जत्न करवाटा भी इंपॉर्टेंट बहुत वैल्यू से दौरान। सेमतिया कॉफीटा होचे हमें बहुत प्रकार चाष करि परिबा एबे बहुत प्रकार काम अच्छे करि परिबा। बट जो दिन आपण कॉफी करूछंती सेटा छोट छुआ धरला भलिया सबू कामटा करी करी कॉफीटा जदि आपण जतन करि परिले तो जेमती छोट छुआ बड़ हैला परे आपणकर जतन करिवो देखिवो सेमती कॉफी सेते टाइम तो लागिबो नहीं 5 वर्ष 6 वर्ष परे आपणको देखिवो केमती। स्टार्टिंग देखंतु जेंती मैडम प्रेजेंट करले पहला मु स्टार्ट करूची हमर डीपीएम मैडम रो कथा। पाखापाखि 22 लाख चारा करिसंती से माने 2 वर्ष रे 26 टा उपरे एसएचजी नर्सरीज माने प्रति एसएचजी विमेन एसएचजी नर्सरी रे 10 to 15 मेंबर्स ता आपण धरंतु 300 रु 400 उपरे फार्मर महिला माने महिला चाषी माने सेति लागिछंती। तो जो माने धान चाष सरला परे को अन्य राज्य को बा को अन्य डिस्ट्रिक्ट को काम पाई जाउथिले से माने से खरा मासे या ठंडा मासरे निजर गाँ पाखे रही करी निजर जते परब मानी करी जदि किसी टंगा पाई पारले सेटा भल कथा कि बाहरे जीवाटा भल कथा। आपण कहंतु कोटा भल घरे रहबाटा भल ना। तो सही कामटा कॉफी दउछे आपण को। तो सेटा हैला नर्सरी कामटा कॉफी वैल्यू चेन रे। तापरे एबे देखिबे मृत्तिका संरक्षण डिपार्टमेंट हमर जो कॉफी प्लांटिंग टा बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से माने नहीं छंती फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स विथ स्टार्टिंग 3 to 5 इयर्स 26 पर्यंत छाई पाई। तो सेठी छाई रो नर्सरी भी अच्छे आउ जंगल सृष्टि भी अच्छे। जंगल सृष्टि रक्षा रे केते जत्न होचे गाँ गाँ लेवल रे हमें देखिबा। बट जदि आपण चाष कॉफी करिवे कॉफीटा गुटे गछ जो नॉर्मल जगह रे हुए नहीं ता पाई गुटे छाई दरकार कंपलसरी दरकार। जेमती एठी आपण बसिचंती ओपन खरा रे बसै देले केमती हेबो हमें जदि छाई तले बे बसिछु सेटा केमती होउची सेमतिया भलिया कॉफीटा गुटे छाई प्रिय गछ माने छाई दरकार ताको। तो से छाई कामटा चालू छे तो से कामटा भी गुटे हेला वैल्यू स्टेज जो कॉफी वैल्यू चेन अच्छे सेठी इंपोर्टेंट कामटा छाई न हेले कॉफी हेबो नहीं। कॉफी हेला परे मु गुटे डाटा शेयर करूचे गुटे 10 हेक्टेयर रो जदि प्लांटेशन अच्छे माने 25 एकड़ खंडे जेमती से बाबू आसी जने दुर्बा गाँ ने तो किए अमर एटी अछंती पूर्णचंद्र अछंती एटी दुर्बा गाँ से मनकर पाखापाखि 20-25 एकड़ गुटे पैच अच्छे तो जदि गुटे 25 एकड़ कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रो दुर्बार अच्छे बा कनिगुमा गाँ कलाहांडी रे अच्छे ना दारिंगबाड़ी कंधमाल रे अच्छे। तो भावन्तु से 25 एकड़ मेंटेनेंस पाई गोटे वर्ष रे आपन को पाखापाखि केते लागिवो 5000 लेबर लागिवो केते लागिवो 5000 से 5000 रे जदि कैलकुलेट करी करी आपन देखिबे 60% माने केते 60% माने 3000 पाखापाखि लेबर या कामटा माँ माने करूछंती। एठी मु दुईटा कथा कहबार चाहिए देखंतु एही प्रोग्रामटा निश्चित हमर माँ मानकर गर्व पाई
लेकिन कॉफी चाष हमें सभे मिसिकी करबार अच्छे जमती गोटे घर चले खाली माँ मान को मुझेदेवी से कॉफी करेंगे एमती कथा नुहे जिते भाई मैंने अच्छा से भी बहुत इंपोर्टेंट रोल अच्छे से 2000 जेनटा अच्छे कूड़ा खसा पिटिंग जिते काम अच्छे आपण को भी करबार अच्छे तो दुहे सांगे सांगे जी रथर दुईटा पहिया जमती चका चले सेमतिया दुहे मिसिकी जदि काम करें तो जाइकरी कॉफी सक्सेस हेबो बुझीपारे तापर नर्सरी जमती है प्लांटिंग है तापर आसे मैनेजमेंट कहला माने आपण देखीदेवे मैडम गोटे फोटो देखाले जोटी कॉफी फलटा थिला फल देखिले तो सबे सबे देखी फलटा लाल रंगर होगी गोटे फल थिला से फल आसला परे कॉफी जो गछ अच्छे से मैनेजमेंट लगे जोटा हमें कहू बुश मैनेजमेंट से पाखापाखी हमर 700 लेबर लगे से भाई माने माँ मानकर दुई जनकर रोल लेकिन 80% कामटा माँ माने करेंगे बुझीपारे 700 जदि अच्छी तो पाखापाखि आपण धरतु 500 पाखे पाखे 480 दिनर कामटा माँ माने करेंगे तो यही प्रकार अच्छे आ सबरू बड़ हमें कहवा जो टाइम रे फल तुड़ा होचे फल तुला बुझीपारे हार्वेस्टिंग धान कटा जमती होचे सेमती कॉफी रो फल तुला हुए प्रति वर्ष अक्टोबर रु नहीं जनवरी फरवरी मास पर्यंत से ही काम रे मो फार्म अच्छे गोटे 10 हेक्टेयर से एक्सपीरियंस शेयर करुच्ची पाखापाखि 1600 लेबर हमको लगे 1600 लोक आसुंच से 1000 उपरे जेन मैंने अच्छा से माने माँ मैंने अच्छा तो टोटल मु यहाँ कहबार चाहूँगी आपड़ देखिए कॉफी चाष माँ मानकर बहुत रोल जमती छुआर गोटे केयर आपड़ करमती भलिया समकीर रोल अच्छे से कामटा करबार अच्छे लेकिन एतार माने इटा नुहे कि खाली माँ माने ही कॉफी चाष करेंगे काम करेंगे भाई माने भी सांगे सांगे से मानकर सांगे रहिबे से जो नर्सरी काम हो बा प्लांटिंग काम हो बा जो हार्वेस्टिंग पर जो मार्केटिंग सबुथी सांगे सांगे गोटे घरर गोटे रथर जमती दुईटा पहिया सेमती चलिकी कॉफी प्लांटेशन करा जाए ये दुईटा तीन पॉइंट में जस्ट हाईलाइट करदेवी बिफोर क्लोजिंग सेशन जो अमर निशा मैडम अच्छा से बहुत बढ़िया कथा गोटे कहले कौन पाई से डाका है इंट्रोडक्शन रे मुझे पूरा डिटेल कहने आपड़ देखु ये जिते डिग्निटरी आसी माने जो वक्ता माने आसी से किसी न किसी एक्सपर्टाइज अच्छे जो आपणकर सहित शेयर करें माँ माने होउछंती मल्टीटास्किंग इंग्लिश रे कहा जाए गोटे शब्द मल्टीटास्किंग माने से गोटे टाइम रे बहुत प्रकार रो काम सांगे सांगे करें से क्षमता माँ मानकर भितरे अच्छे कॉफीटा काम एमती कि जब कॉफी टुला होचे से टाइम रे धान कटा भी चली आखे पाखे सत कथा ना नहीं से टाइम रे आउ टिके आके पचके हमर रागी मांडियार काम चलुथबो से टाइम रे हमर परब आसीथबो से टाइम रे ही प्लांटिंग जेबे चालू छे धान बेडा काम भी चालुथबो तो जदि जे मल्टीटास्किंग थिबो से कामटा जमती घरे मैनेज करूछे सेमतिया कॉफी रे भी मैनेज करि परिबा से आशा सहित आपनकर सबको सब ए सेशनटा कॉफी वैल्यू चेन शेयर करा जाउछे निशा मैडम जे पहला गोटे कंपनी रे थिले बहुत बढ़िया कंपनी अमेजन ना सुनी थे सेटा छाड़ीकरी सेवनकर जो पैतृक चली थिला कॉफी प्लांटेशन से थी आसिकरी से नुआ नुआ गवेषणा निजर लेवल रे करिले आ कॉफीर जो मंजी हमें पपाड़ी दो मंजीर बाहर जो छाली अच्छे बा जो चपा अच्छे से जाम जाली मेरमेलेट जमती ये आम पनस केते काम होचे मु देखिली कोरापुट रे सेमती आम देखा कलाहांडी रे भी किसी काम होचे तो यहीटा गोटे हमको मेसेज देले कि जो कॉफी रो वेस्ट कथा माने जोटी किसी काम न हो सेठी भी हमें किसी काम करी जैम जेली ये सब काम करि परबा इवन कसकरा गोटे काम गोटे प्रोडक्ट से कहले जो छाली पूरा पपाड़ी दिया जाए पल्पिंग करला परे सेठू भी से चाहा तैयारी करूछंती माने किसी वेस्ट नुहे आ सेटा केते टाइम माने देखिबे आपण जस्ट 3 इयर्स कॉफी तो बहुत दिन है 70 इयर्स उपरे सेमनकर घरे चली छे बट से आसला पर 3 इयर्स भितरे 3 वर्ष भितरे से कामटा करले तो बेनिफिट कौन आपण को भी पाखापाखि 3 4 5 वर्ष एमती होचे तो से सांगे सांगे भी आपण भी से करि परिबे मेसेजटा सेया जदि से करि परिछंती तो हमें भी करि परबा तापरे हमर निशा मैडम परे राजेश्वरी रेड्डी मैडम आसी सेमानकर मेसेज कौन आपण देखिए
जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे अछंती से माने जानितेबे और रायगड़ा काशीपुर पाखापाखि भी टुनपार गोटे एरिया अच्छे जानी टुनपार लक्ष्मीपुर ब्लॉक जानी तो लक्ष्मीपुर ब्लॉक टुनपार गोटे जगह जोठी एबे देखिए बहुत प्रकार अलगा काम माइनिंग वाइनिंग और बहुत क्रॉसिंग काम चलुचे लेकिन से मानकर बापा माँ स्टार्टिंग रे से फोटो रखी थे से मानकर बापा माँ कॉफी करबा पई बहुत इंटरेस्टेड तो आज माने 20 वर्ष उपरे से कॉफी चाष करले लेकिन हुद हुद परे से मानकर कॉफी बहुत नष्ट हो गला प्लांटेशन लेकिन से विदेश रे रहुतले से डिटेलटा कही नहीं से विदेश रे रहुतले छाड़ी आसिकरी निजर माँ संगे निजर बापा संगे से ठिया हेले और जो से मनकर एक्सपीरियंस थिला सेटा नहीं करी से मनकर कॉफीटा पुनर्जीवित करिले से और आज निजर ब्रांड रे नहीं करी गुटे विमेन एंटरप्रेन्योर भलिया ओडिशा रे से बहुत बढ़िया काम करूछंते से मेसेज हैला जदि हमर कॉफी खराब भी हे गला पुरनाटा जो जो लमतापुट या कोरापुट हमें किसी कारण बस न जानी पारी थिला एबे मोबाइल दुनिया अच्छे एबे हम एते दूरी भुवनेश्वर आसीचु बहुत प्रकार साधन अच्छे हमें हमेशा नुआ स्टार्ट करि परिबा कॉफीटा भल करि परिबा से मेसेज हमें रेड्डी मैडम रु पाउछु तापरे हमर सुजाता मैडम अछंती से बहुत प्रकार कथा कहले मार्केट ब्रांडिंग केमती करिबा तो सेटा जदपि एभेरे कथा नु है फ्यूचर रे आसीबो बट से माने गुटे सॉइल वर्शिपिंग मॉडल करूछंती ता माने माटीर पूजा तो माटी जोठी सबू बाहरुचे जदि हमें सेटा जदि भल भाव तार स्वास्थ्यटा ध्यान देला जदि सेटा हमें फोकस करला तो हमें जोटा भी काम करवा खाली कॉफी नुहे गोलमिर्च हो बा अन्य छाईर काम हो पनस हो आंब हो भल काम हेबा तो यही सब मोर शेयरिंग संगे मु वाणी के विराम देवार चाहूँ और मुझे धन्यवाद देवार चाहूँगी हमर जॉइंट डायरेक्टर सॉइल कंजर्वेशन डायरेक्टर सॉइल कंजर्वेशन आ कृषि विभाग को कि यही अवसर हमको देले सभा मध्य हमें निजर एक्सपीरियंस शेयर करि पारलु और मैं आशा करूचे कोरापुट रु उपरे एबे कलाहांडी कंधमाल और अन्य जिला ओडिशा कॉफी पाई भल भाव में कंट्रीब्यूट करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद Thank you so much, sir. Now may I request Dr. Sangram Kesari Swain, Dean Research OUAT, for his concluding remarks. Sir, please. समस्त को मोर नमस्कार कृषि ओडिशा 2024 जो मेला रे आपण माने आसी उपस्थित रही मो सम्मुखरे थिबा माँ भौणी माने चाषी भाई माने मंच उपरे थिबा समस्त कॉफी संबंधी आलोचना करथुवा विज्ञ लोक माने मु विशेष भाव में कॉफी उपरे सेमती किसी अधिका ज्ञान मोर नाही किंतु एठी बसिया भितरे आ मु भी जाइछि निजे कोरापुट जाई बुलिक आसीछि कॉफी उपरे किछिटा ज्ञान तो निश्चित भाव में मु आहरण करिछि किंतु आज ये जो आलोचना होउतला जहाँ भी आपण माने शुणुतले कॉफी चाष आरंभ करबा ठारू कॉफी चाष परे कॉफी रु आउ जहाँ जहाँ बाई प्रोडक्ट बाहर अन्य उपजात पदार्थ जहाँ बाहर तार भी केमती उपयुक्त व्यवहार हो पार और ब्रांडिंग हो पार आमर कोरापुट कॉफी ओडिशा रे जेमती गोटे तार ना करि से सब विषय शुणी सारा पर मु भावुची आपण मैंने जो पदक्षेप नहीं कॉफी चाष निजक नियोजित कर भविष्य तो निश्चित उज्जवल अच्छी सरकार तरफ कॉफी मिशन चलती एवं विशेष भाव में मृत्तिका संरक्षण विभाग सरकार एवं कृषि विभाग तांकर प्रत्यक्ष तत्वावधान रे जो कॉफी मिशन चली आगामी दिन में आमर ओडिशार जो गोटे परिचय कॉफी परिचय कोरापुट कॉफी जमती ब्रांडिंग होती सेटा गोटे निश्चित भाव में गोटे बहुत बड़ कथा एवं मुझे पचारुली जे जो कॉफी चाष होउची एतरे सबुठु बड़ कथा कौन मु तो भावुची मु जहाँ कहबी सेटा ठीक हम नहीं भाभी पारनी गोटे कथा हूँ जे कॉफी आम जो जगार चाष करुचे बा जो जगटा को सिलेक्ट करा जाउची साधारणतः पानी सेठी रहिबो नाही पानी निगिडिकी जीवो एवं टे पहाड़िया जगह होइतिबो छाई होइतिबो मु कहीं भाभी पारनी जे से जगह आउ कौन कले आठ आउ अधिका लाभ दे पारिबो माने आमे जेमती चिंता करछे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन समतल अंचल रे धान करछे धान न करी मक्का करबा कि चिनाबादाम करबा जो अधिका लाभ हम सेमिति कॉफी जो जगार होउची
से जगार ता बदल में ताठू अधिका लाभ देला भाया बा सुविधाजनक फसल किसी अच्छी बोली मो मतरे मो मुंड को आसुनी बर्तमान। तेणु निश्चित भाव में यहाँ गोटे बहुत भल कथा जे आपण प्रथमे निश्चित भाव में परिश्रम करेंगे। मु भी आलोचना करूँ आउ टिके आगु जे प्रथमे जितेबाला कॉफी गछ 3-4 वर्ष लगे ता भितर आपण चाषी भाई मैंने केमती से पैसा पाइबे केमती रोजगार हम। तेणु ता भितर आपण इंटरक्रॉपिंग कथा चिंता करेंगे। अन्यान्य मिश्रित फसल ता मझे आउ जो फसल लगा जाई परिबो से फसल मध्य आपण 2 पैसा रोजगार करेंगे। तेणु फसल जदि आमर जितेबाला 3-4 वर्ष हो गला आपण चिंता करूँ जो मैंने तो लाभ पाई से अनुभूति कहले जो मैंने आरंभ करुवे कि आरंभ कर चिंता करुवे से भी गोटे भावतु जे 4-5 वर्ष पर आग तो 10 वर्ष तापर जो आग को 10 वर्ष रहा से 10 वर्ष रु 15 वर्ष पर्यंत आपण ताकू उपभोग करेंगे। तेणु 4-5 वर्ष परिश्रम करी तापर 15 वर्ष पर्यंत बसी खाइला भाया ये व्यवस्था कौन अच्छी। तेणु ये सब दृष्टि देखा गले कॉफी गोटे निश्चित भाव में बहुत भल जिनस जोड़ा चाष उपर सरकार तरफ आपण मानू कहुच्छी। सौभाग्यवशत 4-5 वर्ष तले मत गोटे सुजोग मिलता आमर जो शैलेन्द्र बस जड़े बंधु आसी कहले जमी गोलमरीच टू अमल करने गोटे जंत्र आप बाहर करना लोक मैंने कंधमाल जो गोलमरीच होती हाथ में बलिकी छड़ाऊँ। तेणु मत गोटे गवेषणा करने सुजोग मिलता 2 वर्ष काम कर सारापर आम गोटे गोलमरीच मंजी छड़ा जंत्र विश्वविद्यालय तरफ कराई ताकू पैटेंट अप्लाई कराई डिजाइन रजिस्ट्रेशन मिल सारी अर्थ होची आम बर्तमान व्यवसायीकरण कर चाषी मानक रिहाती दर जोगे देवाई चेष्टा कले पाइपर। तेणु आपण आज जो कॉफी विषय आलोचना होची तार जो भाई साइड भाई सान भाई हो बड़ भाई जहाँ भी हो गोलमरीच उपर मु किछिना गवेषणा करछि मत। तेणु ये जाकी मुझे पाखे बसी मत निजू बहुत गर्वित लगुच। कॉफी उपर बेसी काम न करते गोलमरीच उपर काम कर गोलमरीच जंत्र उपर आउ जहाँ मत उपेन्द्र बाबू कहते आमर कॉफी जिते छोट छोट चाषी मैंने करेंगे आम जो छोट छोट जंत्र सब दरकार होची किछिना गवेषणा करा जाई पारिबो। तेणु प्रकृत कथा होची जोटा से प्रथम कहते जे गोटे प्रोब्लेम थिले तार सॉल्यूशन आसे आम जिते चाषी मेला को सब जाऊ बा चाषी मान सहित एमती सुजोग मिले मु सब चाषी भाई मानू प्रथम हाथ जोड़ी कहे जे आपण मानकर जहाँ समस्या अच्छी से विषय आम को टिके कहया को चेष्टा करूँ आम कम से कम शुणिले से दिगरे चिंता करूँ जे आम कौन करूँ। कारण आम जहाँ हेले भी भुवनेश्वर हो ऑफिस रे बसिले विभिन्न प्रकार काम भितर थाई आपण जेहेतु पूरा जमी उपर अच्छी जो जगार अच्छा आपड़ जो भाया समस्या अच्छा से समस्या से भाया परिस्थिति आम मुंड को आसबनी। तेणु समस्याटा आमको देले आम चेष्टा करूँ गवेषणा करने एमती मोर बहुत अनुभूति अच्छी जो आम जमती ये गोलमरीच जंत्र करूँ मु मोटे स्वप्न भाभी पारि नी गोलमरीच जंत्र उपर गोटे कम करा पड़ो बोली मुझे मांडिया जंत्र उपर कम करुँगी मांडिया अमल जंत्र जोटा थुआई आमर ये एग्जिबिशन आसी थुआई मांडिया अमल जंत्र करुँगी से समय भगवान का आशीर्वाद जे गोलमरीच जंत्र करने गोटे मत आह्वान आसला। तेणु हौ से गोलमरीच जंत्र भी होगला। तेणु जदि सुजोग मिले आगामी दिन में आमर ये जो कॉफी जो छोट छोट जंत्र लगुच ताकू आउ टिके केमती उन्नतीकरण करा से दिगरे मध्य चिंता करा अधिका समय नौनी आमर पुरस्कार वितरण उत्सव हम समस्ते आम जीवा आपण मानू यही नुआ वर्ष आउ थे आमर ओडिशा कृषक और कृषि सशक्तिकरण विभाग तरफ आमर ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय तरफ आयोजक मान तरफ आउ थे शुभेच्छा शुभकामना समस्त को मोर नमस्कार। विशेषकर मते यही मंचरे आपण मान सम्मुखें रही दीपद कहया सुजोग देथारु मु निजको गर्वित और धन्य मन करुच्ची एवं कृतज्ञता जनाऊँगी। नमस्कार। अशेष अशेष धन्यवाद सर। वर्तमान आम से पहुँची कार्यक्रम शेष पर्यायर अनेक आलोचना पर्यालोचना पर वर्तमान हूँ संबोधनार अवसर। मु वर्तमान डाकी नेबी आम गहण उपस्थित थिबा कॉफी एवं विभिन्न जिलार उपस्थित थिबा सफल चाषी भाई भौणी तथा आमर एसएचजी माँ मानक प्रथम मु डाकिबी कोरापुट जिलार श्री माटी बड़नायक पुंजीसेल दशमंतपुर कोरापुटरू आछंती श्री माटी बड़नायक सफल कॉफी चाषी से पाउछंती 10,000 टंकार पुरस्कार राशि।
मु अनुरोध करी डॉक्टर संग्राम केसरी सर को आम चाषी भाई को संबोधन करने। धन्यवाद सर। वर्तमान मु मंच को डाकी नेबी श्री पूर्णचंद्र गोलारी महाशय को दूरवा छटुआरू आसथिबा सफल चाषी से पाउचंते 5000 टंकार चेक राशि। मो मैडम प्रियंवदा विषय को डाकी नेबी मंच उपर को संबोधित करने आम चाषी भाई को। करताली दी समस्त उत्साहित करवा। धन्यवाद। वर्तमान मु डाकी नेबी बेस्ट नर्सरी मैनेजमेंट पुरस्कृत होगा जाऊथबा महासंग्राम जीपीएलएफ बड़ केरेंगा कोरापुटरू श्रीमती रीना बेहेरा मैडम को। मैडम प्लीज दयाकोरी आसतु मंच उपर को। हमारे सम्मानित अतिथि मानक अनुरोध करी चाषी एसएचजी ग्रुप को आमको संबोधित करने। धन्यवाद। वर्तमान आम विभिन्न जिलूर आसथिबा आम घर उपस्थित थिबा सफल चाषी भाई भूणी मानक डाकी नेबी पुरस्कृत होगापाई भद्रक जिलार ज्योत्स्ना राणी साहू। भद्रक जिला भंडारी पोखरी ब्लॉक रो ज्योत्स्ना राणी साहू मैडम। कटक टांगी 14 रु आछंती विजय राउत। तिलेबणी देवगढ़ आछंती जनक प्रधान। धन्यवाद। जगतसिंहपुर जिलूर आछंती श्री अभिमन्यु नायक। श्री अभिमन्यु नायक जगतसिंहपुर जिलूर आछंती। जाजपुर जिलूर आछंती श्री सत्यजित महापात्र। धन्यवाद।
कोलाबिरा ब्लॉक झरसुगुड़ारू आसुचंदी सीताराम नायक। धन्यवाद। केउझर जिल्लारू आसुचंदी श्रीमती हेमलता महंत। खोर्धा जिल्लारू आसुचंदी श्री माधव बलवंत राय। धन्यवाद। बैपारीगुड़ा कोरापुटरू आसुचंदी लक्ष्मी कृसानी। धन्यवाद। कालीमेला मालकानगिरी आसुचंदी आरती डाकुआ। धन्यवाद। बारिपद मयूरभंज आसुचंदी सुधीर कुमार हेम्ब्रम। धन्यवाद। सीनापाली नुआपड़ा जिल्लारू आसुचंदी सुजनी माली। धन्यवाद। पुरी जिल्लारू आसुचंदी श्री रमामणि बारिक। पुरी जिल्लारू श्री रमामणि बारिक। रेंगाली संबलपुर आसुचंदी मुक्तेश्वर सराफ। रमामणि बारिक।
धन्यवाद रेंगाली संबलपुर मुक्तेश्वर सराफ धन्यवाद कुत्र सुंदरगढ़ आसुच्चंती श्री रोसाड़िया कुल्लू श्रीमती रोसाड़िया कुल्लू समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद बर्तमान मु अनुरोध करी जुग्म निर्देशक मृत्तिका संरक्षण विभाग श्री सुरेंद्र नारायण नायक को धन्यवाद अर्पण निमंते सर जय जगन्नाथ मु आजिकार ये जो वैल्यू चेन ऑफ कॉफी एंड इमर्जिंग एग्री बिजनेस फॉर वुमेन ये सेशन होता प्रथमे मु ओडिशा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देवी जे आमर कृषि और सशक्तिकरण विभाग एवं अन्य निर्देशालय को अनुमति देकी यही 3 दिनिया राज्य स्तरीय कृषि मेला अनुष्ठित होईछि एवं तापरे आजिर जो सभा आयोजन होता से आमर विभिन्न जिल्लारू योगदान करथिबा मोस्टली कोरापुटरू आम महिला चाषी कॉफीर एवं जो माने कॉफी नर्सरी करुछंती सेमानकू एवं कंधमाल कलाहांडी एवं आमर रायगड़ा तथा अन्यान्य जिल्लारू जो माने पुरस्कार ग्रहण करिए आमर भल भल चाषी आसीथिले समस्ते अल्प दिनर समय रे भी आसिकी योगदान करिकी ए सेशन रे पूरा समय रहीकी जेहेतु शुणिचंती मु तांको विशेष विशेष धन्यवाद देवी एवं आहुरी भी मु धन्यवाद देवी आजिकार आमर सेशन ये जो आयोजन करा जायतिला सेथिरे आमर सभापतित्व करथिबा श्रीयुक्त संग्राम केसरी स्वाई डीन रिसर्च ओईएटी आमर श्रीयुक्त उपेंद्र साहा सीनियर लियासनिंग ऑफिसर कॉफी बोर्ड कोरापुट सेंट्रल गवर्नमेंट आमर थॉमस मैडम एवं आमर राजी मैडम तथा सुजाता मैडम जो माने आमर निमंत्रण को सम्मान देकी दूररू कर्नाटक एवं कोरापुटरू गाड़ी मोटर एवं एरोप्लेन हठात टिकेट करिक भी आसिकी आम मान को जो उद्बोधन देइछंती सेथिपई सेमानकु चिरकृतज्ञ एवं परिशेष रे आमर डीपीएम मैडम प्रियमदा मैडम लास्ट मोमेंट रे भी आमे तांको जोगाजोग करथिलु किंतु तथापि भी ते उत्साह भारे के आसिकी एठी योगदान करिकी ए सेशन टाकू ठीक रूप से आम मानकु किछि दिग्दर्शन देइछंती जोटा आपण माने फील्ड रे लगेबे सर्वोपरि मीडिया भाई आमर फिकी जेटा को इवेंट मैनेजमेंट करिछि एवं मोस्ट इम्पोर्टेंटली मोर सबु कलिग्स आमर पीडी वाटरसेड्स डीडीसीडी कोरापुट अदर लाइन डिपार्टमेंट ऑफिसर्स एवं आमर एडीएसीज एवं अन्य समस्त ऑफिसर जिला स्तरीय तथा आमर राज्य स्तरीय समस्ते आमको सहयोग करिकी आमर ये सब चाषी मानक आम आठिकी एकट्ठा करि पारलु एवं एठी जो सुजोग पाइले सेथिपई मु समस्त को निज तरफरु तथा आमर निर्देशक जलविभाजिका उन्नयन एवं मृत्तिका संरक्षण तरफरु विशेष धन्यवाद देवी आपण माने बहुत भल जिनस शुणिले किंतु मु दुईटा जिनस खाली तथापि जीवा पूर्व कहबी जे आमर ये जो कॉफी योजना आरंभ होईछि सेइथिरे आमे केवल धनी चाषी मानकु छाड़िकी बाकी सबु वर्गर चाषी साधारण वर्गर हो महिला हुंतु एससी हुंतु एसटी हुंतु समस्ते गोटे हेक्टर पर्यंत माने 2.5 एकर पर्यंत वर्तमान सरकार सहायतार कॉफी चाष करें यही वर्षठू तेणु आपण समस्त मानकु अनुरोध जे आपण मैंने काल विलंब न करी निजर जदि जो जमी कॉफी चाष उपयोग अच्छी जोटा आमर एसएलओ आमे जानू 600 रु 700 मीटर समुद्र पथ ठारू उर्धर अच्छी से ही जमी जदि आपण ना अच्छी कि आपणकर परिवार वर्गर ना अच्छी कि आपणकर निजर कौ जाति भाई बंधु ना अच्छी तांकु उत्साहित करंतु एठी गला परे समस्त को कहंतु सेड प्लांटेशन धरिकी कॉफी प्लांटेशन पर्यंत सरकारी सहायतार आमे कॉफी चाष को प्रोत्साहित करिपारिबा एबे पर्यंत आमे सरकारी जमी रे कॉफी चाष करिकी आपण मानकु 2-2 एकर दायित्व दउतलु किंतु वर्तमान निज निज जमी रे भी कॉफी चाष करि हेबो एवं सेटा एई वर्ष ठू आरंभ हेलानी गत वर्ष आरंभ हेइथिला
କିନ୍ତୁ এইটা যেহেতু যোজনা পারিত হয়ে নথিলা আমি কহি পারি নথিলে এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে আজির যে মুখ্য উদ্দেশ্য ভ্যালু চেন অছি কফি এবং তার প্রডক্টস পাই ভি যে জিনিস দরকার আপনার পল্পর ড্রাইং ইয়ার্ড प्रोसेसिंग पे जो जिनस दरकार मार्केटिंग पे जो जिनस दरकार वैल्यू एडिशन पे जो दरकार ड्राइंग पे जो जिनस दरकार ताहाकू भी आमे योजना रे रखी परिबा तेणु मु आ विशेष कहूनी बहुत समय है आम बसिले आमर सेशन जो समय आरंभ होगा कथा ताठू परवर्ती मुहूर्त भी चलीगलानी पुणी थे सबू समस्ते जहाँ भी भूली जाइए जो मैंने सभाटा को सफल करछंती एवं मोस्ट वेल अगेन ऑल स्पीकर्स पैनलिस्ट आवर मॉडरेटर्स एंड पार्टिकुलरली आवर चेयरमैन ऑफ द सेशन समस्त को मो निज तरफ एवं आमर निर्देशक तथा आमर सचिव कृषि और सशक्तिकरण विभाग तरफ धन्यवाद अर्पण करुच्ची एवं परिशेष में आज सभा सांग है बोली भी निर्देश दूसरी धन्यवाद।